Good afternoon, everyone. Right. Very good afternoon, Mini, Anupam, Sunita, Sanjay. Good afternoon, all of you. Let's get started with today's session. Kabir Prasad, Malik, good afternoon. Okay, so let's get started with today's session and let's see which articles we're going to discuss today. So as you can see on your screen, this infographic tells you that one article we're going to discuss about Poshan Abhiyan. Okay, one article, it is related to hunger, written by a person from UNICEF. Okay, so Arjun, Kabir Prasad, Ashneet, yes. So this person is chief of nutrition for UNICEF India. Okay. अनुपम करजी 11 AM की क्लास की बजाय अनुपम कोई क्लास क्लैश कर रही है क्या? Okay. So in that case, yes, let's move forward. हाँ जी श्रवण राज, आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं. सो फर्स्ट आर्टिकल ये देखेंगे न्यूट्रिशन पे. दिस टॉक्स अबाउट रेलेवेंट फॉर योर जीएस पेपर 2. ओके, द टॉपिक ऑफ हंगर एंड पावर्टी. ठीक है, हंगर एंड पावर्टी वाला जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है दिस आर्टिकल. कबीर प्रसाद, नो नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर. आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट दिस पर्सन इज फ्रॉम यूनिसेफ इंडिया. ओके, तो इनको थोड़ी न्यूट्रिशन की के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी. राइट, देन सेकेंड आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस, द रियलिटी ऑफ इंडिया एट क्रॉस रोड्स. अब ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है? दिस आर्टिकल इज इन अ वे टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इंडिया इज गोइंग थ्रू. ठीक है, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पैंडेमिक, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये जनरली जैसे नॉर्मल रोज आर्टिकल आते हैं वैसा ही आर्टिकल है. नथिंग मच, नथिंग न्यू रादर इन दिस आर्टिकल. ओके, यस. सो ये एक बार देखेंगे. नॉट मच पॉइंट्स बट वी विल ट्राई दैट इफ possible we can also take up third article, the road taken. Okay, this article is about, as you can see in the infographic, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे it is proposed कि NHAI का proposal है हाईवे बनाने का between सलेम एंड चेन्नई. ठीक है, चेन्नई और सलेम के बीच में हाईवे बनाने की बात हो रही है. एंड बट there is lot of protest against this. फिर this case went in Madras High Court, then it went in Supreme Court. So क्या बात हो रही है? If time permits we will discuss this also. Okay, yes, Pradeep Kumar. Right, so सबसे पहले first of all talking about Poshan Abhiyan and why are we discussing about this, why there is a need to discuss about this. So first of all, let's know about Poshan Abhiyan. What is Poshan Abhiyan? Okay, so news में इसलिए है because we have completed 1000 days of this initiative of Poshan Abhiyan. That is why it is a news. That now that we have completed 1000 days, it was launched in March 2018. Okay, and we are next week we'll be completing 1000 days of Poshan Abhiyan. Yes, Manali. So we need to review our performance and how much money we have spent, how much results we have got, right? So first of all, what is Poshan Abhiyan? Poshan Abhiyan, like I said, was launched in March 2018. What were the targets under this? So Poshan Abhiyan basically focuses on 4 things. ठीक है, कौन सी 4 चीज़ों पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया एंड रिड्यूसिंग लो बर्थ वेट. ठीक है, सो यू शुड नो इट फोकसेस ऑन stunting. What is stunting? We have discussed so many times earlier. Reducing all these 4 things. Anemia, okay. हाँ ठीक है.
अंडर न्यूट्रिशन and to reduce, basically to reduce low birth weight proportion, यानी कि जो the children who have low birth weight, okay, इनकी proportion कम करना. मिनी मनाली, okay, okay, yes, ये हमने discuss भी किया था. Stunting is, like we discussed earlier, stunting is when your height is lesser, I mean as you take the proportion of your age, as compared to your age, आपकी height अगर उतनी नहीं बढ़ रही है, then low height to age ratio is stunting, whereas when we talk about wasting is low weight to age ratio, ठीक है, low weight to age ratio. So stunting height to age, wasting weight to age, you have to remember every time we talk about hunger and malnutrition, right? So what is Poshan Abhiyan focusing on? Poshan Abhiyan is focusing on reducing stunting, reducing anemia, undernutrition, low birth weight, reducing all these 4 things. ठीक है? Okay. नीलिमा, सुशील सिंह, नाम ऊपर लिखा है. All these articles are from The Hindu. नाम लिखा है 1000 Days of Nutrition and Billion Dreams. Okay? बिल्कुल, चंद्रास. Right. So the target, what are the targets? हाँ जी, correct. What are the targets? That you have to reduce stunting by 2% every year. You have to reduce undernutrition by 2% every year. You have to reduce anemia. Anemia is basically related to especially young children, young girls, adolescent girls, when they have, जिसको हम कहते हैं हिंदी में खून की कमी हो जाती है, ठीक है. So anemic girls usually have lesser hemoglobin, lesser blood content, lesser RBCs and everything, right? So anemic हो जाते हैं वो बच्चे. This is hugely because of low hemoglobin levels. Yes, Manali, hugely because of undernutrition. Okay, so you have to reduce under this Poshan Abhiyan, you have to reduce anemia by 3% annually per annum. Okay, and reduce low birth weight. Okay, you have to reduce low birth weight proportion by 2% annually. So 2%, 2%, 3% and 2% every year. Harshpreet, the focus is on reducing because abhi we have a long way to go to eliminate. Focus is on reducing. Okay, so one thing you all must know, that target of mission is to bring down stunting, because in our country we had stunting levels, stunting in under 5 years, stunting in the children of under 5 years of age, ठीक है. Under 5 years of age के जो children हैं उनकी stunting we have to reduce from 38% to 25% by 2022. तो ये भी एक main goal है, that by 2022 only 25% of children should be left stunted, because अभी 38% of under 5 years of age children are stunted. Okay, stunting नवदीप अभी बताया ना, इशिता. ओके, स्टंटिंग मतलब आपकी हाइट आपकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ रही, ठीक है. आपकी जैसे अगर एज बच्चे की हो गई है 5 years या 6 years की एज हो गई है, लेकिन उसकी हाइट उतनी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एज. ओके, सो दैट इज स्टंटिंग. फाइन. आदिल, 2%, 3%, 2% एंड 2%, ये एनुअल टारगेट्स हैं कि हर साल हमने इतना अचीव करना. ओके आदिल, so this is done. Then moving on, what is the article saying in this regard? ये तो हमने पोषण अभियान के बैकग्राउंड की बात करी, and how we are doing it, we are using different surveys कर रहे हैं to analyze that people are getting. We are doing different surveys to analyze whether people are getting proper nutrition or not, whether children are getting proper nutrition or not. ठीक है, आपकी जो बाकी सारी schemes है ना, बाकी सारी schemes of ICDS schemes, all of you know, right? Your midday meal and everything, all these are converged under this abhiyan. National Nutrition Mission जो है, it is a convergence of all these schemes. Okay? Yes. So एक council भी set up की गई है under this abhiyan, council called National Council on Nutrition, NCN.
What is this council named? National Council on Nutrition, okay, headed by Vice Chairman of नीति आयोग. ये भी चीज आपको याद रखने वाली है, that National Council on Nutrition headed by Vice Chairperson of नीति आयोग. ओके, ठीक है. तो ये सब चीजें हो गई. अंडर अभियान वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ लॉट ऑफ आशा वर्कर्स. वी हैव स्वस्थ भारत प्रेरक्स. ओके, दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर दिस अभियान कॉल्ड स्वस्थ भारत प्रेरक्स. ठीक है, दे विल बी डिप्लॉयड टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स so that they can coordinate with the district officials to ensure that the children are getting proper nutrition or not. Okay, ठीक है. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अनुपम कर जी, यस, वर्ल्ड बैंक ने लोन भी दिया है, 200 मिलियन का लोन दिया है, $200 million लोन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. ओके, हाउ मच लोन? $200 million loan by World Bank for National Nutrition Mission, right? So this was a good revision. Oh, Pragati Pal, superb. So this was a good revision about about all this पोषण अभियान. ठीक है, तो अब इससे आगे चलते हैं. 1000 minutes नहीं है, 1000 days हैं. 1000 days will be completing 1000 days of पोषण अभियान because पोषण अभियान was started in March 2018. So from March 2018, now we are in December 2020. So about 1000 days are completed. Okay. So the idea is that in 2017, a staggering 68% of deaths, okay, 68% of 1 million deaths of children, जो under 5 years children हैं, उनकी जो deaths हुई हैं in 2017. In 2017, the deaths of children under 5 years of age, 68% of those deaths were just due to malnutrition. ठीक है, so you can see we are having lot of malnutrition deaths in India. ठीक है, this has been told in a Lancet study in 2019. ठीक है, so this statistic you can use. Then India is home to about 46.6 million stunted children. Nearly half of all under 5 child mortality is attributable to undernutrition. What does that mean? That means that 50% of children, okay, if 100 children are dying, 50 of them are dying just because of undernutrition, because they do not have access to proper food. Okay, so this is a very big number. Okay, so any country cannot aim to attain, if you want to become an economic superpower, if you want to ensure that your demographic dividend is tapped, है ना, your demographic dividend, ये बच्चे क्या है, future ही तो है ना, so your demographic dividend, your human resource becomes skilled. Can you really achieve these targets with such undernourished children? No, we cannot, right? So that is why we have to work on eliminating hunger, zero hunger. ठीक है, zero hunger, it is one of your sustainable development goal also, है ना, sustainable development goal भी है आपका zero hunger. Okay, so stunting is an indicator of chronic undernutrition. Stunting, अभी हमने बात करी age to height ratio, height to age ratio is an indicator of chronic undernutrition, especially protein energy malnutrition. What is protein energy malnutrition? PEM. So these are some names, like some terms like stunting, yes, like protein energy malnutrition. It is when your body is deficient of proteins. ठीक है, आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है. आलोक 6530 NCN जो है, अभी मैंने बताया आपको NCN क्या है. NCN इज नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन. ठीक है आलोक, ओके. So yes, Adil. Okay, so stunting is an indicator of chronic undernutrition. ये चीज हमने देख ली. What is wasting? Wasting is an indicator of acute undernutrition. What is difference between chronic and acute? All of you know. Chronic is with the passing of the time, the problem becomes more severe. Okay, so with the passing of the time, problem becomes more severe, but acute is at the present the problem is highly severe. ठीक है, so wasting is an indicator of acute undernutrition and result of
more recent food deprivation. ठीक है, yes मिनी, yes मनाली, करेक्ट. ठीक है, अगर मतलब रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा आप यू हैव गॉन थ्रू हंगर, यू हैव गॉन थ्रू फूड डिप्रिवेशन, तो उसकी वजह से वेस्टिंग हो जाती है और लॉन्ग टर्म में फाइनली यू एंड अप बिकमिंग स्टंटेड. ओके, so what is malnutrition? पहले भी we have discussed that malnutrition is not just about deficiency. Okay, it is more about imbalance of nutrition in your body, that you are not getting proper nutrition in your body. So it includes both undernutrition and overnutrition. मैंने आपको बताया था कि undernutrition भी malnutrition में आता है और obesity भी malnutrition में आता है. Okay, so malnutrition is not only about hunger. Okay, so benefits of that is why we always keep on talking about balanced diet and everything, है ना. So benefits of good health are perceived not only at the individual level but also levels of society. Obviously good health होगी, simple सा फंडा है when we are talking about individual level, है ना. individual level पे it is good for the family if the family members are healthy. How it is good for society to focus on hunger? Of course it is good for society because if the children will be healthy, the youth will be healthy in future. Plus if the women, especially women, will be healthy, women and children पे क्यों focus है हमेशा? women will be healthy, they will be more decisive in deciding the family planning में वो थोड़ी और decisive होंगी. Plus and then they will give birth to healthy children. Okay, and thus the youth will be healthy, because I told you this vicious cycle of poverty, that a woman who is poor plus undernourished. Okay, a woman who is poor plus undernourished, ठीक है, undernourished है, poor है, will give birth to an undernourished child. ठीक है, undernourished child को birth देगी वो, ठीक है, and that undernourished child will all the time go through hunger, will not do good in studies, because if you're not nourished properly, your capacity of understanding and grasping things also suffers. Okay, so will not do good in studies, will end up being poor, और ये पूरा cycle चलता रहता है. And if that baby which is born is a woman, so again if a undernourished female child again gives birth to a undernourished baby, and this cycle goes on. ठीक है, तो ये चलता रहता है, क्योंकि अभी भी in our country we have problems of child marriage. yes यही आदिल, good. This is the paradox that India, despite being self-sufficient, कि हमारे पास इतना खाना है that we can produce, ठीक है, despite that 50% of deaths of under 5 years of children is due to undernutrition. ठीक है, यही तो पैराडॉक्स है इंडिया का, क्योंकि इसमें आपको सिस्टम का लूपहोल दिखता है, इसमें आपको दिखता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ लैक इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं. ओके, सो हाउ मैल न्यूट्रिशन अफेक्ट्स चिल्ड्रन, ये अभी मैंने बात की, दैट their brains are affected. If their brains do not develop, their potential is not matched. Okay, yes Shripad, unequal distribution of resources. So if proper nutrition are given, they will be performing good in studies and they will have a better future. If the proper nutrition is not given, they will end up being poor in studies. ठीक है, अदिति मैं आती हूँ उस पर. Okay, so nearly half of the children under 5 years in India were found to be stunted and wasted for their height. ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, और आपको परफॉर्मेंस भी समझ आ रही है कि they will not be able to acquire as much skills, they will not be able to perform good at school. ये सारे effects हैं. Okay, so what has government done? ठीक है, what has government done? देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अच्छा काम किया है. There are some appreciable steps taken by government. In 2018, government started this. You should know the full form. Okay, you should know the full form of this Poshan Abhiyan. ठीक है, तो ये फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन. ठीक है, दिस इज PM
overarching scheme for holistic nutrition. ठीक है, yes yes. तो 2018 में लॉन्च हुआ एम्ड एट होलिस्टिक अप्रोच. इसमें होलिस्टिक कैसे है? बिकॉज फ्रॉम चिल्ड्रन टू विमेन टू अंडर 5 एवरीथिंग इज बीइंग इंक्लूडेड इन दिस. कि स्कूल लेवल पे आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एट दी स्टेज ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है. सो अंडर द स्कीम गवर्नमेंट स्ट्रेंथेंड द डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन सो दैट मोर चिल्ड्रन हैव राइट टू स्टार्ट लाइफ फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? गवर्नमेंट ने ये ICDS स्कीम निकाली थी जो मिड डे मील स्कीम थी. वाई दिस पोषण अभियान इज परफॉर्मिंग गुड? बिकॉज इट इज हेडेड बाय द गुड लीडरशिप. लीडरशिप अच्छी है. कैसे लीडरशिप अच्छी है देखते हैं. काजोल, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग, कबीर प्रसाद, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन. O is for overarching, S is scheme for holistic nutrition, HAN. ठीक है, ओके आगे आ जाओ. अब फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट 1000 days फ्रॉम द एक्शन ऑफ कंसीविंग अ चिल्ड्रन. अब ये 1000 days वाला ड्यूरेशन, वाई इज इट मोर इम्पॉर्टेंट? राइटर इज सेइंग दिस 1000 days इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. This 1000 days is even more important. Why? Because this 1000 days is also a duration from when a woman conceives, ठीक है, when woman becomes pregnant, and then from that time, from the period of conceiving till the time the child becomes at 2 years of age. ठीक है, तो ये बहुत ही crucial time माना जाता है for the infants. Okay? हाँ, yes, Nilima Shravan, correct. So because first 1000 days from the action of conceiving a child till the child turns 2 years old is the most important period of nutrition. Okay, so this is why this 1000 days is also important, and thus the need to review the performance of this abhiyan. Okay, so how has pandemic affected Poshan Abhiyan? Because till now under Poshan Abhiyan we were giving food grains, we were giving proper food access to the children, but now during the pandemic the Anganwadi centers were not functioning, the midday meals stopped because students stopped going to schools. Okay, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं हो पा रहा था, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो जिंक, फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स मिलती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी बंद हो गई. तो इन चीजों की वजह से पैंडेमिक हैज प्रेशराइज्ड इवन मोर, और पैंडेमिक हैज हैड अ एडवर्स इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट ऑन पोषण अभियान. है ना, ये चीज समझ रहे हैं सब लोग? राइट? क्या बफरिंग हो रहा है? ओके, ठीक है. सो दिस इज देयर, एंड इवन 2019 दिसंबर में, 2019 में दिसंबर में ये रिपोर्ट भी आई थी दैट द फंड्स ग्रांटेड टू पोषण अभियान ओनली 30% ऑफ दैट फंड्स वर यूज्ड. ठीक है, तो ICDS की फुल फॉर्म कोई पूछ रहा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. ओके, तो ICDS क्या करता है? इट गिव्स food supplements to children below 6 years of age and to pregnant women. Okay, हाँ जी, तो इसमें ICDS में सब कुछ है. ICDS के बारे में जो पूछ रहा है, yes, ICDS is everything about your supplementary nutrition है, प्री स्कूल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, जो आपको वैक्सीन्स लगती हैं छोटे बच्चों को, everything is there in ICDS. Okay, so this is done. ये देख लिया हमने पैंडेमिक ने कैसे इम्पैक्ट किया. सक्सेस ऑफ पोषण देख लिया, वाई इट हैज इम्प्रूव्ड एंड एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स पोषण अभियान हैज वर्कड बेटर. वाई? बिकॉज इट वॉज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. ओके, वन ऑफ द रीजन, एंड दिस ऑल्सो मोटिवेट्स द चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू परफॉर्म बेटर. क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को चेक कर रहे हैं तो ऑफकोर्स नीचे वाले भी ढंग से काम करेंगे. ओके, इशिता, दिस ईयर ये प्रॉब्लम आई, लेकिन अभी तक इफ वी टेक टिल 2019 एंड देन इट वाज परफॉर्मिंग गुड. ठीक है, सो इंडिया हैज सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अर्ली चाइल्डहुड पब्लिक इंटरवेंशन स्कीम्स, लाइक ICDS की बात करिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिड डे मील हो गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गई. ओके, सो द कंक्लूजन इज that although we have gone through a pandemic,
it is time that we take corrective measures, we take corrective steps to ensure that whatever facilities are should be given under this पोषण अभियान should be extended. मतलब ये सारी facilities को फिर से back on track ले आना चाहिए, right? We should start off these facilities as soon as possible and we should ensure that all the benefits are going to the beneficiaries. बच्चों के पास ये सारे nutrition और सारे benefits जा रहे हैं. अब doubts पूछ लो जो भी हैं. अनुपम, risk factor as in ठीक है. Okay, if this is done, this was about this article. Sushil Singh is asking, apart from legal ways, what can be done to stop child marriage? Education, educate people about the problems and the adverse effects of child marriage. ठीक है, people education, people awareness, changing people's mindset is the main priority. जब तक literacy education नहीं बढ़ेगी तब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी. Okay, Shravan Raj, frankly speaking, yes, Shravan. Okay, Aditi Chauhan, Aarti, about the difference between IAS and IPS, not the right place to ask this question, I'm sorry. Aditi Chauhan, ICDS में जो nutrition supplements provide होंगे वो particular private company का होगा. नहीं अदिति, नॉट लाइक दैट. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अक्रॉस दी स्टेट्स. ओके, चलिए, इफ दिस इज डन, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड आर्टिकल. अब सेकेंड आर्टिकल क्या बात कर रहा है? सेकेंड आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, बट you can get some of the points. Second article is saying that recently the world is talking about India diminishing as a democracy. ठीक है, प्रगति पाल, ICDS स्कीम तो बहुत ही पुरानी स्कीम है. It was launched I think somewhere in 80s probably. ठीक है, बहुत पुरानी स्कीम है वो. ओके, अब इस पे आ जाओ प्लीज. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, द रियलिटी ऑफ एन इंडिया एट क्रॉस रोड्स. व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट? What it is talking about? It is talking about the fact that in recent weeks India has begun to resemble a war zone. अब ये तो कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना that India has begun to resemble a war zone. ठीक है, ऐसा कभी भी मत लिखना एग्जाम में. ओके, बट what is being talked about that the world and the media across the world is talking about India is diminishing as a democracy because India की being a democratic country हमेशा से बहुत ज़्यादा it was talked about, right? 1975, ठीक है, thank you. Jasim Nazar, ICDS was launched in 1975. Okay, so new media around the world is replete with news media replete with stories or full of the stories of India's diminishing democracy. ठीक है, कैसे? देखो कैसे हुआ. पेपर टू कैसे हुआ ये? why are they talking about India being diminishing as a democracy? Because so many bills are being passed without consultation of opposition party or without consultation of people, and especially seeing the protest or the farm bills for the farm bills. So the world media is talking about that India is becoming too much protectionist and India is diminishing as a democracy. ठीक है, तो ये चीज बात हो रही है. One, okay, then if we compare in the terms of economy also India is facing recession. Technically if we talk about India is facing recession. Okay, सबके डाउट्स ले रही हूँ, रुक जाओ, सबके डाउट्स ले रही हूँ. ओके,
सो एक तो इकोनॉमी आपकी खराब चल रही है, एक इंटरनली डिस्टर्बेंस चल रही है, ओके, ओवर एंड अबव यू आर फेसिंग अ पैंडेमिक दैट इज टू देयर. सो the euro, the Australian and Canadian dollars, South Korean won, all these have appreciated. matlab these currencies are doing good in terms of exchange rate. They are becoming stronger as compared to dollar, whereas India's rupee is still depreciating. ठीक है, so this is another reason for criticism. Then how India's policy are performing. अभी भी आप देख लो कि कहा जाता है that the current government appreciates itself that in our time, in our period, the terror attacks have reduced. ठीक है, Maoist violence have reduced, northeast में situation has become better, but things like the steps of GST, things like the steps of JNK removal of special status, the world media is talking about that India में काफ़ी चीज़ें unilaterally decide हो रही हैं despite of what is done in a democracy. In a democracy सबका consensus लिया जाता है और चीज़ें करी जाती हैं, but in currently in India चीज़ें unilaterally decide हो रही हैं, जैसे removal of special status of JNK. Now this is my personal opinion that there are some steps. ठीक है, अब जनता तो कुछ भी आप करो बात करेगी, ठीक है, the media will always say something. आप कुछ भी करो, if you do good, if you do bad, there will always be someone to criticize you, but the idea is that there are times we really need to take strong steps to ensure that long term impact is good. ठीक है, so इलेक्शन की अगर बात करें, इलेक्शन में आप देख रहे हो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, कम्युनल पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है. तो फॉर ऑल दीज रीजंस इंडिया इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड इन द वर्ल्ड मीडिया. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कम्युनल केसेस एंड पॉलिटिकल वायलेंस फीचर्ड इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड यूपी. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर बीइंग डन राइट, जिसकी वजह से इंडिया में नॉट बी द लीडिंग कंट्री व्हेन इट कम्स टू डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट्स, बट अंडर द लेवल ऑफ फाइटिंग फेक न्यूज एंड सोशल मीडिया. ऑल्दो हम कहते तो हैं, बातें तो बहुत करते हैं दैट वी आर फाइटिंग फेक न्यूज एंड एवरीथिंग, बट देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ मीडिया चैनल्स विच आर एयरिंग पेड न्यूज. ठीक है, ये सबको पता है आज के टाइम पे कि देयर इज अ ह्यूज कंसेंसस बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द मीडिया चैनल्स. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है. तो हमने क्या देख ली, आपका इकोनॉमी सही नहीं चल रही, मीडिया इज बीइंग बायस्ड, इलेक्शंस में प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, इलेक्शन में डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, राइट, योर एक्सचेंज रेट रुपीज डिप्रिशिएटिंग, देन पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट. फॉर ऑल दीज थिंग्स देयर इज अ नीड टू इंश्योर कि कंसेंसस बेस्ड, क्योंकि ये मतलब इतने ज़्यादा डिस्ट्रप्शन से डील करने के लिए, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट से डील करने के लिए, देयर इज अ नीड टू इंश्योर दैट मोर ऑफ पब्लिक फोरम्स शुड बी कम अप विद. ठीक है, ज़्यादा डाइवर्स कल्चर्स को, डाइवर्स लैंग्वेजेस को, इन सब चीज़ों को साथ में लाया जाए, ताकि अब कोई ना कोई तो क्रिटिसाइज करेगा ही, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट लार्जर चंक ऑफ पीपल इज वॉकिंग विद यू इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अगेंस्ट यू. ओके, हाँ हाँ, ठीक है, तो यही सब था. नो स्टैटिस्टिक्स इन दिस आर्टिकल, राइट. देन एक फटाफट से ये देख लेते हैं इफ पॉसिबल. इज नाउ लेट मी सी सम डाउट्स. सुमन रावत, बायस्ड मतलब पार्शियल होना, किसी की तरफदारी करना. ठीक है, बायस मतलब पार्शालिटी, किसी की तरफदारी करना. अनुपम, अनुपम बिल्कुल हुआ है. कबीर प्रसाद मलिक, ओके. प्रगति चंक मीन्स बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. काव्यराज, डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी ये होता है जहां सबकी सुनी जाती है. ठीक है, सब लोग अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, है ना, लेकिन डेमोक्रेसी में सबकी सुन के डिसीजन लिया जाता है. बट डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी मतलब आप सबकी नहीं सुन रहे, ऑपोजिशन की नहीं सुन रहे, और अपने बेसिस पे अपने डिसीजंस, अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे हो विदाउट लिसनिंग टू समवन एल्स.
शिखर चौधरी, ओके। नहीं नीलिमा, बिल्कुल लूंगी 2021 में, क्यों? ठीक है, सो ये दिस वाज अबाउट इट, राइट। द आइडिया इज देखो अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें ये बात हो रही है बेसिकली दैट अ हाईवे इज प्रपोज बिटवीन सेलम एंड चेन्नई। चेन्नई और सेलम के बीच में एक हाईवे प्रपोज है, ठीक है। अब प्रपोजल रखा है, अभी लैंड एक्वायर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ओके, देयर इज नो लैंड एक्वायर्ड, नथिंग डन, बट देयर वाज अ ह्यूज स्केल, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, ओके, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट दिस। सो लेट्स सी what the article is saying in this regard, ठीक है। तो let's see this article first of all. अच्छा, ओके नीलिमा, here you can see it says by upholding the notification intending to acquire agricultural land for proposed Chennai Salem greenfield highway। पहली बात तो प्रदीप कुमार हिंदी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी शाम को 8:30 बजे 8:30। Ashneet Pal Singh, this can be relevant for your environment topic of GS3, okay। So it is saying that by upholding notification intending to acquire agricultural land for proposed Chennai Salem, Supreme Court has paved the way for completing land acquisition। क्या हुआ है? पहली बात तो greenfield highway क्या होता है? What is greenfield highway? Greenfield highway is basically there are two type of projects, greenfield projects and brownfield projects, okay। So greenfield project is fresh investment, yes। नहीं अदिति, not about the third, ठीक है। ग्रीनफील्ड हाई प्रोजेक्ट इज फ्रेश, यानी कि एक फॉरेस्टेड लैंड है, ठीक है, वहां पे मुझे कुछ प्रोजेक्ट लगाना है तो पूरे ट्रीज काटने पड़ेंगे, लैंड क्लियर करनी पड़ेगी, लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, एंड देन आई विल हैव टू सेट अप माई प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड इज कि ऑलरेडी लैंड एक्वायर्ड है, वहां पे ऑलरेडी कुछ काम चल रहा है, उसी में कुछ मैंने इंप्रूवमेंट कर लिया, उसी में कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, दैट विल बी ब्राउन फील्ड, okay। So greenfield is when you acquire new land and set up a new project there. Brownfield is there is an existing project or an existing acquired land, okay, which is already being used for some purpose. You are making your new project on that, okay। Update or modify is brownfield, correct, okay। Aditya Prakash, I will send towards the end of the session, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है, the Supreme Court has said, अभी प्रोटेस्ट हो गया था बहुत ज्यादा, ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस हाईवे proposed between Salem and Chennai, ठीक है। So Supreme Court has paved the way for completing the land acquisition। Crux बताती हूँ, what is the crux? Central government NHAI proposed, there was protest, this case went on to Madras High Court, Madras High Court said that this is not possible, you cannot acquire land because it will lead to large scale environment destruction, the land is a land of reserve forest की land है, तो on environment, on wildlife and the people living nearby, it will lead to large scale destruction, okay। So there were possible livelihood concerns, ecological concerns given by Madras High Court, okay। But when the thing went on to Supreme Court ने बोला कि अभी तो लैंड एक्वायर हुई नहीं है, स्टिल द लैंड इज नॉट एक्वायर्ड, सो वी कैन नॉट बिफोर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज डन, वी कैन नॉट वी कैन नॉट आउटराइटली रिजेक्ट द प्रपोजल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। नाउ यू टेल मी दैट इफ यू आर अलाउइंग टू ओके decide which land has to be acquired and there is a go ahead to the project, till before acquiring land environment impact assessment should be done। once you acquire the land then you do environment impact assessment, तब तो obviously आप project complete करोगे, right।
but once your land is not acquired, you do environment impact assessment, you can stop the project there and then. So the problem is that writer is saying that Supreme Court has gone ahead in such a manner that it has paved the way for completing the land acquisition process and sought to ensure that environmental clearances are obtained before this construction. ठीक है? Yes. So it has ruled that it will be premature to expect authorities to obtain environmental approvals at the stage of identifying the land linked to the this highway area. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले अब इनको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने दो. अब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स हमें भी पता है, if government has to do it, government has decided it has to do it, then environment impact assessment, environment clearances भी मिल जाएंगे, सब हो जाएगा and the project will start, right? तो इसी regard में this article is there. It is saying, see over here यहाँ पे देखो, the High Court, the Madras High Court had shown great sensitivity to possible livelihood and ecological concerns. It had favored early judicial intervention, relying on judgments of from the US that spoke out against letting project advance to such a stage. ठीक है, तो हाई कोर्ट का बेंच को गलत ठहरा दिया गया. The 3-judge bench has now ruled that High Court was wrong. 3-judge bench किसका? सुप्रीम कोर्ट का. 3-judge Supreme Court bench has now ruled that High Court was wrong in holding that clearances under environment and forest were required even before initial acquisition notice. ठीक है, तो ये rather similar judgment Supreme Court has given in 2006. देखो, similar judgment Supreme Court has given in 2006 as part of growing body of jurisprudence. The top court had laid down in Karnataka Industrial Area Development Board. ये केस था Karnataka Industrial Area Development Board का. ठीक है, उसमें it had said that before acquiring land for development, possible environmental impact should be properly done. But now it is going away from that judgment of 2006. In a departure from its judgment of 2006, it now says that statutory framework and the process laid down for acquiring land did not provide for prior clearance. यानी कि अब पहले तो उन्होंने बोल दिया कि environment clearance, environment impact assessment पहले होना चाहिए, लेकिन अब आपने allowance कर दी. ठीक है, तो this always points out to some mischief of Supreme Court. ठीक है, so the court's line of reasoning based mostly on development centric statutes. यानी कि राइटर कह रहे हैं कि कोर्ट की जो इस बार जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, by rejecting the idea of Madras High Court, this is showing that court is becoming more inclined towards economic development by compromising the ideas of protecting the ecology. ठीक है, so these are the things being discussed in this article. Manali, I would not say that it is judicial overreach, क्योंकि ये केस actually गया था सुप्रीम कोर्ट में. Overreach is when Supreme Court takes up Supreme Court or any court takes up a case by itself, okay, picks up a case by itself and gives a judgment on that. कबीर प्रसाद, यानी कि प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंडेड. कबीर प्रसाद प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंडेड का मतलब है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, द पॉसिबल एडवर्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट शुड बी प्रॉपरली, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट पे कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकता है या फिर ट्राइबल एरियाज हैं वो उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है, ट्राइबल्स को हटाना पड़ेगा, तो सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको पहले समझा जाए, उसके बाद ही लैंड एक्वायर की जाए. ओके Ishita, we cannot say SC is in favor, Supreme Court is in favor, but Supreme Court has said that wait before we decide and say that this project should not be started, we should do proper assessment and we should wait for the land which has to be identified. पहले एक land identify करने दो, फिर environment impact assessment करने दो, फिर decide करेंगे कि करना है या नहीं करना. तब तक तो project has moved इतना further that it will probably happen only. ठीक है, ओके, चले वापस. So this is where we discussed the articles today. If you want to read this, you can also read this one. It says the land use pattern
मैं जूम कर देती हूँ, आपको अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो। वो कह रहा है द लैंड यूज पैटर्न फॉर 10 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रोजेक्ट रोड इज प्रेडोमिनेटली एग्रीकल्चरल। ठीक है, वो जो लैंड है, ओके 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 प्रणव, वो जो लैंड है दैट इज एग्रीकल्चर लैंड। प्रणव, you can follow from here only. So the land which has to be acquired for highway construction, it is a 10 kilometer ka stretch, it is an agricultural land, it is a forest area, rather reserve forest area. Okay, tentative length of affected forest area along the proposed alignment is 13 kilometer. About 13 kilometer of forest area will have to be cleared. ठीक है, हाँ जी, कभी प्रसाद, सेलम स्टील का नाम नहीं सुना है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, श्रीकुतन, नो आई डोंट थिंक, बिकॉज वो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला है वो तो चेन्नई और उसको कनेक्ट करता है ना, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है, तो ये तो सेलम और उसको कनेक्ट कर रहा है। या सो नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इज देयर इन दिस 10 किलोमीटर स्ट्रेच एक्सेप्ट फॉर सम जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे जूज हैं। देयर आर अबाउट 32 सेटलमेंट्स अलोंग द प्रपोज्ड अलाइनमेंट इस स्ट्रेच में। ठीक है, ब्रिजेस वगैरह ये सब हैं, मतलब मेनली फॉरेस्ट एरिया है और फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है। ओके, सो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी 11 लाख किलोलीटर्स, 11 lakh kiloliters, and Tamil Nadu is a water scarce state. Okay, so total requirement of water for this is 11 lakh kilometers during the construction phase, and it will be arranged for through tankers. ठीक है, about 6400 trees are likely to be affected. तो ये सारी चीजें, these are the possibilities in this project. ठीक है, right? So Pranav, if you want to ask something, you can ask. Tentative सुमन मतलब लगभग, लगभग इतनी है, पूरा कितना है अभी एग्जैक्टली नहीं डिसाइड हुआ। ओके, स्कार्स, स्कार्स, SCARCE, यानी कि पानी की कमी, पानी की कमी, स्कैरसिटी कहते हैं ना। ठीक है, राइट, सो दिस वेयर वी एंड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। Let's meet tomorrow at 12 PM. ठीक है, नीलिमा, अगर आपको याद होगा चेन्नई में पीछे तमिलनाडु में काफी ये कहा जा रहा था कि पानी काफी कम बचा है, राइट? ओपेड प्रगति, ओपेड और ओपेक, या आदित्य प्रकाश, I'll give you the link. Okay, Harshpreet, thank you. चंद्रदीप, हाईवे बिटवीन सेलम टू चेन्नई प्रपोज्ड है ये। ओके, सुशील सिंह, श्योर। अच्छा, वो प्रगति, वो डोंट वरी, वो ओपिनियन से, ओपिनियन एडिटोरियल ऐसे, उसका दोनों का वो होता है शॉर्ट फॉर्म। ओके, ठीक है, राइट देन। चंद्रदीप, ओपेक पे कुछ आर्टिकल आते हैं तो डिस्कस करते हैं। गौरव, अच्छा प्रणव, ओके ओके ओके, श्योर, ओके, थैंक यू। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो प्रणव दैट इसकी लास्ट लाइन थी, बट इट इज नॉट इनकंसीवेबल दैट कोर्स पोजिशन में हैव रेंडर्ड द प्रोजेक्ट फेट अकम्पली। फेट अकम्प्लाई मतलब यानी कि किसी को अब उसके हाल पे छोड़ देना, उसको कि फेट आगे आगे जो होगा पता चलेगा। ठीक है, टाइम विल टेल जैसे कहते हैं ना, तो वैसा। ओके प्रणव, क्लियर? चलिए, सुमन रावत, आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, ठीक है। All right then, thank you so much for joining. Let's meet tomorrow. Till then, have a great day. Bye bye.